So no problem. We are studying Canto 1, Chapter 2, Text 32. ठीक है, Divinity and Divine Services. So let's begin. यथा हि अवहितो वहनिर् आरुषिका स्वयोनिषु ननैव भाति विश्वत्मा भूतेषु च तथा पुमान् यथा हि अवाहितो वानिर्दारुषु इका स्वयोनिषु नानैव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान् यथा हि अवाहितो वानिर्दारुषिका स्वयोनिषु ननैव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान् पार्थ श्लोका पढ़ो यथा हि वही तो वाणी दारुष एका स्वयोनिषु नानेव भति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। नेक्स्ट प्रिया माता जी आप पढ़ो यथा हे अवहितो वह निर्दर्श एकः स्वयोनिषु नानेव भति विश्वात्मः भूतेषु च तथा पुमान्। ओके वर्ड टू वर्ड मीनिंग कहा जाता है whoever reads Bhagavatam Krishna comes to reside in their heart. So if we study Bhagavatam or we hear Bhagavatam, Krishna comes to reside in our heart. So we should regularly read Bhagavatam. Yatha, as much as he, exactly like Avahita, surcharged with Vahani, fire, Darushu, in wood, Ikaha, one, Swayonishu, the source of manifestation, Nanaiva, like different entities, Bhati, illuminates, Vishwa Atma, the Lord as Paramatma, Bhuteshu, in the living entities, Cha and Tatha, in the same way, Puman, the absolute person. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. The Lord as Supersoul pervade all things just as fire permeates wood, and so he appears to be of many varieties, though he is the absolute one without a second. क्या बोला है? The Lord as super soul pervade all things, just as fire permeates wood. अब जैसे आग होती है, जब लकड़ी सामने होती है तो पूरी लकड़ी पे आग लग जाता है. It just takes over. So similarly, super soul takes over all the things. So it says, and so he appears to be of many variety, though he is the absolute one without a second. अब जैसे कहते हैं भौतिक जगत में बहुत सारा वैरायटी है ना, देयर आर लाइक वैरायटी ऑफ स्पीशीज एंड इट सेज लॉर्ड इज इन एवरी एटम. तो इट सीम्स लाइक ही इज इन एवरीथिंग. तो बहुत सारे रूप हैं या ऐसा वैरायटी है, बट ही इज द वन विदाउट अ सेकेंड. डिफरेंस नहीं है. अब ये श्लोका पढ़ोगे ना आप, ये बहुत amazing इसमें knowledge है. It says Lord Vasudev, the supreme personality of Godhead, by one of his plenary parts expand himself all over the material world, and his existence can be perceived even within the atomic energy. कि भगवान कहाँ है, even the एक एटम के अंदर भी परमात्मा होते हैं. Matter, antimatter, proton, neutron, etc. are all different effect of the Paramatma feature of the Lord. तो इन सब में भगवान होते हैं. As from wood, fire can be manifested, or as a butter can be churned out of milk. So also the presence of the Lord as Paramatma can be felt by the presence of legitimate hearing and chanting of transcendental subjects, which are specially treated in the Vedic literatures like the Upanishads and Vedanta. अब जैसे कहा जाता है यू नो, अब जैसे बटर कैन बी चर्न आउट ऑफ मिल्क, हम लोग दूध से बटर निकाल सकते हैं ना, ठीक है. तो सिमिलरली अब वुड है तो वहां से फायर मैनिफेस्ट हो सकता है, ठीक है. सिमिलरली the presence of Paramatma, how we can understand, how we can at law says that I manifest in the heart of those who study the Shastras or means studies the Bhagavatam और the chant the holy names. क्या होता है, भगवान उनके हृदय में मैनिफेस्ट होते हैं. एज आई सेड, जैसे आप सबने एक माचिस देखा होगा, है ना, माचिस देखा है आपने. सो इन अ मैच स्टिक देयर इज अ फायर, इन एवरी मैच स्टिक देयर इज अ फायर. मगर वो दिखती है क्या? नहीं दिखती है. टिल वी स्ट्राइक द मैच स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मैच बॉक्स, तब वो फायर क्या होती है? मैनिफेस्ट होती है ना, इग्नाइट होता है वो फायर. सिमिलरली इन आवर ऑल हार्ट देयर इज अ सुपर सोल. हम सबके हृदय में कौन है? परमात्मा है. बट ही मैनिफेस्ट टू दोज, हमें दिखते तो नहीं है. लोग बोलते कहाँ है, हमें तो नहीं पता चल रहा, ठीक है, हम तो आवाज भी नहीं सुन पाते. भाई मेरा दरवाजा बंद कर देना, हमें पता भी नहीं चलता है. क्यों? बिकॉज वी आर इनटू द इग्नोरेंस. हम अविद्या में है तो हमें पता नहीं चलता कि देयर इज अ सुपर सोल. टू अंडरस्टैंड दैट
जैसे ही हमारी शुद्धता होती है हृदय की, एज वी से those who chant the mantras from Upanishad and Vedanta, भगवान क्या होते हैं, the Paramatma will be manifested in the heart of those. So he is in everyone's heart, but the thing is he manifests in the heart of a devotee. ठीक है, किसके हृदय में मैनिफेस्ट होते हैं? डिवोटी के हार्ट में. ठीक है, so you all want to be in connection with super soul, so read the Bhagavatam and chant the holy names of the Lord. The super soul will be manifest in your heart and he will guide you personally from within. तो खुद आपको हृदय से गाइड करेंगे. कहा जाता है ना that Krishna as the Chaitya Guru is residing in our heart, and he's external when we become serious, when we really wanted to take the guidance, then he comes an external manifestation as a spiritual master, or the guru or the mentors or the counselors we get, but he got an external manifestation is the spiritual master. ठीक है, जब भी कोई एस्पिरेंट भक्ति योगा में, साधना भक्ति में सीरियस होता है, तो उसको जो गुरु के रूप में वो एक्सटर्नल मैनिफेस्ट, जो चेता गुरु वो एक्सटर्नली मैनिफेस्ट हो जाते हैं स्पिरिचुअल मास्टर के रूप में, और फिर हम अपने स्पिरिचुअल मास्टर को वहां से देख पाते हैं, उनसे गाइडेंस ले पाते हैं. ठीक है, श्रीमद् भागवतम इज द बोनाफाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज वैदिक लिटरेचर्स. ठीक है, जितनी भी वैदिक लिटरेचर्स हैं उन सबका जो बोनाफाइड एक्सप्लेनेशन है वो कहाँ पे, निचोड़ कहाँ पे है? श्रीमद् भागवतम में. अब जैसे कल मैं कुछ सुन रही थी, उसमें तो बताया था गौर गोविंद महाराज हमारे एक बड़े आचार्य या वैष्णव आप कह सकते हैं, हमारे गौड़िया संप्रदाय के, हमारे इस्कॉन में. तो गौर गोविंद महाराज बचपन से ही उन्होंने 11 वर्ष की आयु तक बहुत सारे गौड़िया मठ के शास्त्र पूरा पढ़ रखे थे, जितना भी हमारे गौड़िया वैष्णव में शास्त्र आते हैं. मतलब चैतन्य चरितामृत भागवतम तो वो 11 साल की उम्र में ही पूरा पढ़ चुके थे. तो ही वाज सच अ ग्रेट वैष्णव इन आवर मूवमेंट. एंड when महाराज मतलब he was so scholarly मतलब वो जब लेक्चर देने आते थे ना, he used to carry this much of books, मतलब इतनी सारी किताबों को उठा के लेके आते थे, मतलब शास्त्रों को उठा के लेके आते थे लेक्चर देने के लिए, और उनका एक लेक्चर 2-3 घंटे का होता था. He says Bhagavatam means the full discussion should be go on for many hours. That is what भागवतम. 1 घंटे में क्या भागवतम पढ़ोगे आप? अब जैसे आधा घंटा हमारा एक श्लोका भी अच्छे से कवर नहीं होता है, तो like he says भागवतम means for many hours. So when he used to quote, he carries so many diaries and the notebooks and books, so he used to quote from here and there, so many कहाँ से quote करते थे, पता नहीं चलता था कि इतना उनको ज्ञान था, काफी था. तो when he studied, point I wanted to make it, कि उन्होंने बहुत सारे शास्त्र पढ़ रखे थे हमारे जो गौड़िया वैष्णविज्म में है, वैष्णव लिटरेचर्स के हैं बहुत सारे हैं. इट्स नॉट जस्ट द प्रपात ने जो हमें किताबें दी हैं, दैट इज भागवतम, चैतन्य चरितामृत, कृष्णा बुक, स्मॉल बुक्स आर देयर. द मेन बुक्स प्रपात हैज गिवन अस एनओडी, भक्ति रसामृत सिंधु का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, वर्जन है. फिर नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन हमें दिया है उपदेशामृता, भागवतम है, चैतन्य चरितामृता है. तो ये मेन किताबें प्रपात हमें देके गए हैं. तो जब गौर गोविंद महाराज को एक्चुअली सेवा मिली थी प्रपात की किताबों का उड़िया में ट्रांसलेट करने का, तो पहला जो उनको एक बार प्रपात ने उनको जो बैक टू गॉडेड मैगजीन है उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करने के लिए बोला था, और ही डिड इट वेरी नाइसली. देन प्रपात गॉट टू नो कि ही इज वेरी स्कॉलरली. तो प्रपात ने उनको बोला था कि मेरा जो किताबें हैं उसको उड़िया में ट्रांसलेट करना, और महाराज तब तक सोते भी नहीं थे जब तक कि वो उसको उड़िया में अपना कोटा जो डेली का है वो ट्रांसलेट कर नहीं लेते थे. तो तब तक वो अपना सोते नहीं थे, मतलब ही रेगुलरली ही हैज सम कोटा टू ट्रांसलेट प्रपद बुक्स, सो ही डिड. एंड जैसे जो देखो एक होता है मियर ट्रांसलेशन, जैसे हमारा गूगल ट्रांसलेटर होता है ना, सब ऐसे दे देता है. तो मगर ही यूज्ड, जब उनको कोई चीज समझ नहीं आती थी वो उसको अच्छे से पढ़ते थे, ध्यान से देखते थे कि क्या इसका मतलब है, फिर अपने हिसाब से भी उसमें कई बार अपने हिसाब से नहीं, मतलब प्रॉपर्ली बोनाफाइड सोर्सेस में कंटेंट डालते थे. सो दैट इज अ प्योर डिवोटी हु पुट इट अप देयर. एंड जब उन्होंने प्रपात का किताबें पढ़ा था, व्हेन ही गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू प्रपादास भागवतम एंड चैतन्य चरितामृता इंग्लिश वर्जन्स, एंड तभी वो कहते थे अगर किसी को हिंदी, तो अगर किन्हीं शिष्यों को इंग्लिश नहीं आती थी ना, तो कहते थे अगर आप सच में प्रभुपाद का देखना चाहते हो ना, वो नेक्टर लेना चाहते हो, अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी में पढ़ो. और जब उन्होंने प्रभुपाद की किताबें पढ़ी तो उन्होंने बोला मैंने इतना सारा शास्त्र पढ़ रखा है, मतलब गौड़िया वैष्णविज्म का, पर प्रभुपाद ने उन सब का निचोड़ बस इसमें दे दिया. तो हमें कुछ और किताबें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. इन द भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरित्र, प्रभुपाद हैज गिवन द ऑल, जितने भी जैसे हमारे कई आचार्य रहे हैं, कई आचार्यों की इतनी गौड़िया वैष्णव में बहुत सारी किताबें हैं,
भक्ति विनोद ठाकुर का है, भक्ति दास सरस्वती ठाकुर जी का है, विश्व मतलब देयर आर मेनी आचार्य इन आवर गौड़िया वैष्णविज्म, उन सब की जितनी भी किताबें हैं, कमेंट्रीज हैं, प्रभुपाद ने उन सब का निचोड़ इसमें दे दिया है। तो मतलब ही वॉज लाइक ए इसेंस सीकर, कहते हैं ना नेक्टर सीकर, कि जो हनी भी होती है वो क्या करती है, एक फूल पे नहीं बैठी रहती है, वो यहाँ से नेक्टर लेती है, फिर दूसरे फूल पे चले जाती है, वहां से नेक्टर लेती है, डजंट मीन अटैच, ही टेक्स नेक्टर फ्रॉम एवरीवेयर। एंड व्हाट प्रभुपाद इज साराग्रही, Prabhupada is like a Saragrahi. He took the essence and put it up in his books. So similarly, the whole thing is in the Prabhupada's किताबें, हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है. We need not to study other books. There are so many books are there in our Vaishnava Sampradaya. हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं. If you just study Prabhupada's books, everything is there. तो मतलब it's an essence. Prabhupada has given जितना हमें जरूरी है ना हमारे हम कलयुग जीवों के लिए कि हम भगवत धाम जा सकें, Prabhupada has given more than enough, you know, in his books. So I was just making the point कि जैसे भागवतम है, जितने भी हमारे उपनिषद वेदांत हैं, सबका निचोड़ इस भागवतम है, उसी प्रकार से प्रभुपाद ने जितने भी किताब है सबका एसेंस हमें अपनी किताबों में दे दिया है. So this Bhagavatam is a bona fide explanation of all the Vedic literatures, and Prabhupada's books are the bona fide explanation of all the things that is needed for a जीवा. जो हमारे लिए जरूरी है सारी चीजें हमें दे रखी है, हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है. So this is all glories to Srila Prabhupada, the person Bhagavatam, all glories to Srimad Bhagavatam, the book Bhagavatam. Okay, so Jai Srila Prabhupada and Jai, all glories to Srimad Bhagavatam. So the Lord can be realized through the oral reception of the transcendental message. कि भगवान को कैसे रियलाइज किया जा सकता है, ऑरल रिसेप्शन. ऑरल रिसेप्शन मीन्स लिसनिंग, श्रवणम, ठीक है, श्रवणम, द ट्रांसेंडेंटल मैसेज, एंड दैट इज द ओनली वे टू एक्सपीरियंस द ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट. और यही एक तरीका है ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट को समझने का, कि वी हैव टू हैव द ऑरल रिसेप्शन. पहले क्या होता था, श्रुति धरा. पहले के जो भक्तगण या ब्रह्मचारी या डिवोटीज होते थे, श्रुति धरा. श्रुति धरा मीन्स जस्ट लिसनिंग एंड इट रिमेन्स इन देयर माइंड, यू नो. So right now, because we are the Kaliyuga people, अब हम लोग श्रुतिधर नहीं है ना कि सुन के पूरा दिमाग में बैठ जाएगा. तो इसलिए हमारे लिए किताबें जो हैं ये व्यासदेव जी ने बुकिश फॉर्म में ही हैज गिवन इन अ हार्ड कॉपी, ठीक है, ताकि क्योंकि सुन के तो हमारे दिमाग में कुछ बैठने नहीं वाला. मगर जैसे भागवतम क्लास होता है, यहाँ पे ट्रांससेंडेंटल ऑरल रिसेप्शन की बात की जा रही है, तो दैट मीन्स वी हैव टू हियर दिस ट्रांससेंडेंटल मैसेजेस. हमें इनको सुनना है. इवन द रीडिंग इज अ साइलेंट हियरिंग. जो रीडिंग होता है वो भी साइलेंट हियरिंग होता है, बट वी हैव टू हियर फ्रॉम द पर्सन भागवतम, देन द इफेक्ट इज देयर. ऐसे व्हेन द पर्सन इज पोटेंट, द लिसनर इज पोटेंट, देन द रिजल्ट इज देयर. एज परीक्षित महाराज was a perfect speaker and Sukdev Goswami was perfect listener, and Sukdev Goswami was a perfect speaker. The result was there. You know, similarly we have to have that reception, very submissive reception, and the speaker should be representing the Bhagavatam as it is, you know, then the result is there. As says, when the husband and wife are potent, then the child, they can beget the child, you know. Similarly, when the listener and the speaker are potent, the bhakti lata bij, the fruit will be there in the form of devotional service. Okay. So as fire is kindled from wood by another fire, the divine consciousness of man can similarly be kindled by another divine grace. अब जैसे आग लगाते हैं हम लोग आग लगाना मतलब लकड़ियों में आग लगाते हैं, ठीक है, किसी घर में आग नहीं लगानी है. So अब क्या होता है, अब like every day I used to have a fire at, मतलब हम लोग आग लगाते हैं ऊपर, मतलब लकड़ियों में आग लगाते हैं, ठीक है. So यहाँ पे तो what happens when we हम लोग लकड़ियों में आग लगाते हैं, तो इट्स नॉट, वी हैव टू हैव अ सोर्स जहाँ से हम उस पे आग लगा सके, है ना. डायरेक्टली लकड़ी में तो आग नहीं ना लग जाएगी, किसी दूसरी लकड़ी पे आग लगी होगी, या मैस्टिक होगा, या लाइटर होगा, कुछ होगा, उससे आप उस पे आग लगाते हो. तो सिमिलरली टू हैव द डिवाइन कॉन्शियसनेस, वी हैव इट नीड टू बी किंडल्ड फ्रॉम अनदर डिवाइन पर्सन, ठीक है. अब हमारी चेतना कहता है कॉन्शियसनेस कैन चेंज द कॉन्शियस. आई मेड कल एक स्टेटमेंट था, मैंने शेयर किया था with one of my senior god brother. It will, consciousness is served only by the consciousness. He says consciousness is served only by the consciousness. मतलब कि जो अब जैसे हमारी चेतना है, अगर इसको शुद्ध बनाना है, ट्रांसेंडेंटल बनाना है, तो हमें किसी जो व्यक्ति विजडम में है उसके संग में रहेंगे, तभी हमारी चेतना जो है वो चेंज हो पाती है या सुधर पाएगी, है ना. So we need to have the grace of a divine, we need to have a divine grace
to kindle that fire in our consciousness of a fire of Krishna consciousness, we need to have the divine grace of the pure devotees. So his divine grace, the spiritual master, can kindle the spiritual fire from the wood like living entity by imparting proper spiritual messages injected through the receptive ear. This statement is very important, please make note of this. ये statement बहुत देखो, प्रभुपाद का एक एक statement is like so amazing. So देखो यहाँ पे क्या बताया प्रभुपाद ने, his divine grace, the spiritual master, can kindle the spiritual fire. The spiritual master can kindle the spiritual fire from the wood like living entity. हम क्या है, हम लकड़ी जैसी जीवात्माएं हैं, हमारे अंदर वो अग्नि गुरु जला सकते हैं from the by imparting proper spiritual message injected through the receptive ear. So we have to have the receptive ear. If we have the receptive ear, the spiritual master can impart this message onto us, and the wood like living entity, that the fire from our heart will ignite. Igniting the fire जिसको कहते हैं, हमारे हृदय में वो कृष्णा भावनामृत है, मगर उसको स्ट्राइक करने की जरूरत है. वो स्ट्राइक कहाँ से आता है? स्पिरिचुअल मास्टर के थ्रू. For that we need to have the receptive ear. Until you have that receptive and submissive ear, the knowledge cannot be imparted onto you. We need to have, says tadvriddhi pranipatena pariprashnena sevaya. So we need to have submissively inquire, rendering the service in a humble mood, then we can understand the knowledge. If somebody is telling something to us and we were like, I know. As I remember when Tamal Krishna Maharaj, he had that habit to say, I know. So Prabhupada kuch bhi kehte the, I know, Prabhupada, I know. Prabhupada says, when you know everything, why then what is the need of me to tell you anything? Then he understood, no. Disciple means dumb and fool in front of a spiritual master. I don't know anything. Though I'm a scholar, but I don't know anything. I'm just a fool. Now you can tell me what to do. So like that way. So we need to have the receptive ears. The person should be receptive. अगर आप receptive नहीं हो तो आप ले नहीं सकते. अब जैसे जो पात्र होता है, like patra is like that way, like when we beg, our hands are like this way, something can be there. So patra जो होता है वो इस तरह से होता है. अब anything you pour it into it, it can hold, but if the patra is like in a opposite direction, so anything you put into it, it will fall down, so we have to be like receptive, then we can hold something. But if you're like that way in a challenging mode, nothing can be coming into it. So we have to be receptive, to receive the knowledge. Therefore, one is required to approach the proper spiritual master with receptive ears only, and thus divine existence is gradually realized. I would like to read something for all of you from this content. I will read it out. यहाँ पे क्या बोला गया? First, let me finish up this one, then I will read it out. Okay. So यहाँ बोला, therefore one is required to approach the spiritual master with receptive ears only, and thus divine existence is gradually realized. फिर हम वो जो spiritual जो super soul है हमारे हृदय में manifest होते हैं. When we through our receptive ears we listen the message from a bona fide spiritual master, then only the super soul will manifest and we can realize him. The difference between animality and humanity lies in this process only. क्योंकि जो जानवर है वो सुन नहीं सकता ना, गुरु कैसे बनाएगा? How he can सुन सकता है in the sense he is having no affinity to the message of Godhead. A human being can hear properly whereas an animal cannot. We can listen. अभी यही क्लास है, कितने जानवर बैठे हैं यहाँ पे? You all can say we are two-legged animals, Mataji. Yes, we are two-legged animals. But as we are into this process of listening, the message, transcendental message, so we are like becoming the humans. So we are becoming the humans. So this is there. So I would like to read something to all of you. Just hold on. Yes, something was there I read yesterday. This is regarding the spiritual master, how important the spiritual master is. So that was there. Yeah, यहाँ पे भी एक ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की अमृता वाणी किताब है, वहाँ पे प्रश्न उत्तर है. There is a question and answer. In that this session is regarding the question answers regarding the spiritual master. उसमें भी यही सवाल पूछा गया था, when does the supreme lord manifest in the heart? अभी यही पढ़ा ना हम लोगों ने, when does, अब ये सुपर सोल कैसे मैनिफेस्ट होते हैं? The same question is there, when does the supreme lord manifest in the heart? The answer was given, if out of good fortune we can feel the spiritual master's presence in our heart, if we can see the spiritual master traveling and walking in our heart, then the supreme lord will manifest in our heart too. Means when you're fully dedicated to the spiritual master, he is walking and talking in your heart.
Spiritual master means taking his instruction to as our life and soul. Then the super soul will manifest in our heart. There is no way to attain the Lord's service other than by serving and satisfying that personality who always inspires us to offer our devotion to the Lord. And who is that personality? The spiritual master. Our Shiksha Guru, Diksha Guru. They inspire. There is no way to attain the Lord's service other than by serving and satisfying that personality who always inspire us to offer our devotion to the Lord. So that who is that person? The spiritual master, the Vaishnavas. They inspire us to render service to the Supreme Lord. So when we hear submissively, when we follow their instructions, then we can see then we can make a rapid progress in a spiritual path. And then only the super soul will manifest in our heart too, because they carry the super soul Lord in their heart, and they can only give us the Lord. One who carries the Krishna, he can only give us the Krishna. Like there is a song by Bhakti Vinod Thakur, that Ohe Vaishnava Thakur. In that song, let me read it out, that statement. Yeah. In the end, what was it written? That Krishna se tomhara, Krishna dite paro, tomhara shakti ache. Ami to kangal, Krishna Krishna boli, dai tava pache pache. Krishna se tomar, Krishna dite paro, tomara shakti ache. What he says, Krishna is yours. You have the power to give him to me. I'm simply your servant running behind you shouting, Krishna, Krishna. So the spiritual master carries the Lord in his heart, and he is the one who can give us Krishna. He has that power to give us Krishna. So we have to run behind him shouting, Krishna, Krishna, I need Krishna, holding on to their lotus feet. So we have to beg to the spiritual master, to the Vaishnavas. Then only the Lord will manifest in our heart. Otherwise, it's a difficulty thing. So see, in the our Vaishnava Acharya songs are it's given. The Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has mentioned the same point. So this is a very important statement. So always remember that. So by serving the spiritual master, the Lord will manifest. Otherwise, there is nothing. You know. And there is nothing, no auspiciousness without serving the spiritual master. Can I don't want to get into the topic of spiritual master right now, because it's not that topic. It's regarding the manifestation of the super soul. So this is it. So I think I'll be stopping up here. So any of you having any questions or comments, so please go ahead. Yes. So this topic is quite very wide. So many things can be spoken about it, but I think it's clear now. So any of you having any comments or any realizations, so please go ahead. Yes, Parth Pratim. जैसे आपने कहा कि मतलब इन फ्रंट ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर वी आर मतलब अपने आप को तुच्छ समझता है ना? Yes. तो इसमें इस बात को हम इससे रिलेट कर सकते हैं. आपको याद है आपने बताया था कि ह्यूमिलिटी अलोन कैन पियर्स द हार्ट ऑफ द लॉर्ड. Yes. तो स्पिरिचुअल मास्टर के सामने आपको ये मतलब ह्यूमिलिटी को भी दर्शाता है ना. और ये एक बेसिक ह्यूमन कैरेक्टर भी है. सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में नहीं, अगर कोई स्पिरिचुअलिटी में नहीं भी है फिर भी अगर वो कर रहा है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है. तो ये एक बेसिक मतलब मुझे लगा कि ये ह्यूमन बिहेवियर का बहुत बड़ा कैरेक्टर है कि जो हम सीख सकते हैं. Yes, it is. It's not in front of spiritual master, but actually, the who is the real person जिसके सामने हमें ऐसा होना चाहिए, that is the guru only, because he is doing the ultimate thing. Obviously, being a human, we are having that humble quality. That is very good. We should imbibe in our character, and it should be there. But the main point here it is who is the person. Is it in front of your boss? You are very humble. That's not a right place, I think. And in front of the mundane people, you should be very humble. It can be to some extent, but not all the time. Otherwise, people will be like can take the misadvantage, means can have the disadvantage of that. Like there was an cobra who became the disciple of Narada Muni, and then Narada Muni says, now you should not bite anyone. And snakes are by nature are very envious, they're very envious. But now he's a disciple, he is committed to Narada Muni. He says, okay, I will not. And now people
thought now he has become the Vaishnava, now he is not going to do anything. So everybody started up like beating him, torturing him, because he has given the vow to his spiritual master, he will be humble. So like people are like started torturing him. And what to do? He was into very bad condition. And when Narada Muni again visited him, he says, "Oh, my disciple, what had happened to you?" He says, "You told me not to like bite anyone. See, the people what has done. I was just trying to be humble, and what they did to me." And then Narada Muni says, "We have to be humble. You have the hoods. Don't bite them, but show your hoods." So in the material world, Prabhu, we have to be humble, but at the same time, we have to show our hoods also if something is there, so that people don't take advantage of us. But in the spirituality, in front of our Guru, there is nothing that he can take advantage of us or anything. We can naturally be humble without any fear. The only thing that can make us fearless is the spiritual master. The shelter of spiritual master can make us fearless. So that's why we need to be fully surrendered to him and very humble. Okay, is it understood to you? Yes, Parth Pratik? हाँ, हाँ दी। ये और एक क्वेश्चन है Yes. कि स्पिरिचुअल हाँ दी। और एक क्वेश्चन है कि जो आपने जिस वर्जन में स्पिरिचुअल मास्टर को बताया, डिस्क्राइब किया है, तो हम उसको दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में से किनको समझे? मतलब इट्स फर्स्ट हमारे पैराग्राफ लिए है, ये कौन? दीक्षा गुरु की बात हो रही है यहाँ पे, शिक्षा सॉरी द स्पिरिचुअल मास्टर, एंड मोर ओवर द शिक्षा गुरु इज ऑल्सो द सेम वे. हमें दोनों के लिए हम्बल होना चाहिए. ऑब्वियसली इट्स बाय द मर्सी ऑफ सी दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु एक तरह से एक पैरेलल लाइन में ही होते हैं. शिक्षा गुरु हेल्प्स यू टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर दीक्षा गुरु. Then he is a Shiksha Guru who helps you to getting more closer to your Diksha Guru and helps you to follow up the instructions of your Diksha Guru. So that way Shiksha Guru plays the role and guides you. Because कई बार क्या होता है, हमारे पास इतना एक्सेस नहीं होता अपने स्पिरिचुअल मास्टर का हर समय में. तो इट्स द शिक्षा गुरु whom we are associating, whom we can take guidance, who help us, but he should be in parallel line with the Diksha Guru. But बात ये आ रही है कि जो दीक्षा गुरु है, देखो शिक्षा गुरु तो कितने भी हो सकते हैं, मगर दीक्षा गुरु एक ही होता है हमारा, and he is the one actually who imparts the knowledge in our heart. That is spiritual master, दीक्षा गुरु. ठीक है. So शिक्षा गुरु, मगर ये जो जैसे हम्बलनेस की बात आ रही है, तो ऐसा मूड हमारे शिक्षा गुरु के सामने भी होना चाहिए. ठीक है. अंडरस्टैंडिंग पार्ट? हाँ जी, समझ गया. Okay. Any further question? Hope so. Yes, Priya Mataji, do you have anything, or you are sleeping? Are you awake? You are there or not? Hare Krishna. Hare Krishna, Priya Mataji, are you there? I think she is sleeping. Okay, so that was there. So we have to be like very humble in front of our Guru. So okay, we need to understand properly. So there is a few more questions. I can read it out. जो इसी से related था. I can, if there is a time, so that's why I'm just taking time to read it out. ठीक है. It says, what mentality should a sincere disciple have? एक जो सिंसियर डिसाइपल है उसका क्या मेंटेलिटी होना चाहिए अपने गुरु के प्रति. सो क्या लिखा है? सिंसियर डिसाइपल. यस पार्थ, यू वांट टू से समथिंग? नहीं, मुझे लगा कि आप हमें क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसलिए मैंने. नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही. आई एम जस्ट रिपीटिंग द आंसर. आई एम टेलिंग द आंसर्स बिकॉज थोड़ा समय है, एंड आई थिंक यू पीपल डिडंट हैव एनीथिंग. प्रिया माताजी, आई थिंक शी इज स्लीपिंग. So so if nothing is there, so I can read it out, take the opportunity to teach. So that is there. So sincere disciples should be completely devoted to their guru. They should know their spiritual master to be as good as God and the only object of their love and devotion. The spiritual master is my eternal master and I am his eternal servant. तो ये हमारा भाव होना चाहिए. This is how our disciple thinks. Service to the spiritual master is our disciple's life ornament and means of survival. Disciples do not know anything except their spiritual master. They always think of their spiritual master while eating, sleeping, dreaming, and serving. They are fully convinced that the spiritual master is the fully independent personality of Godhead. A sincere disciple has the following mentality: even if my spiritual master does not accept service from such an unqualified person as myself, I will always be prepared to render unalloyed service at his feet with body, mind, and words. If he kicks me, I will think it is because of my incompetence. His kick will come because of my fault. He is always right. May temporary sense desires not distract me from his service even for a moment.
My only prayer is that my spiritual master mercifully accept my service. I pray never to fall into bad association or to fall away from his lotus feet. My only solace is that my spiritual master is more merciful to unqualified person like me. With a desire to achieve his causeless mercy, I will become greedier for his service. So it's the spiritual master's causeless mercy that he accepts us. We are so unqualified person. So हमारा क्या होना चाहिए? We should always try to render service to our spiritual master in whatever situation we are into. चाहे वो accept करे ना करें, but we should have that mood to serve our spiritual master. You know. So एक और सवाल आता है. Is there is no hope of attaining auspiciousness without serving the guru? तो क्या उत्तर मिलता है? How can we attain auspiciousness if we reject the well-wisher who has come to bestow auspiciousness? एज जो तीसरा नामा अपराध है वो क्या है? गुरु अवज्ञा, कि गुरु की आज्ञा का अवहेलन करना. तो जब हम उनकी आज्ञा का अवहेलन ही नहीं करेंगे, आज्ञा का अवहेलन कर देंगे, ये तो बहुत बड़ा अपराध है. तो हम अपराध जब करते हैं तो हम भक्ति में प्रगति कैसे कर सकते हैं? तो सिमिलरली सेज हाउ द ऑस्पिशियसनेस कैन बी बेस्टो अपॉन अस इफ वी डोंट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आवर गुरु. द स्पिरिचुअल मास्टर कम्स फ्रॉम वैकुंठा. He is not an ordinary person. He is a Vaikuntha man. The Lord has sent him. How can we go back to Godhead if we renounce his shelter and association? The spiritual master mercy is the root of all auspiciousness. What have we actually done to receive his mercy? Rather, we should renounce our false ego and offer our respectful obeisances at his feet. To give up the false ego that I am the seer, I am the enjoyer is called offering obeisances. तभी हम दंडवत करते हैं ना, हम अपनी ईगो को छोड़ रहे हैं. So this is why the word Namaha, obeisance, is added to the mantras. Om Namo, ऐसे आता है ना, Nama Om Vishnu Padaya. So obeisances. Receiving the spiritual master mercy destroy the sinful mentality that I am the doer. तो इसमें I चला जाता है हमारा जब हम गुरु की शरण लेते हैं. Receiving the spiritual master mercy awaken the pride that I am the Lord's servant. Material pride, false ego, and all sinful mentalities are removed simply by his influence. I was not accustomed to worshipping my spiritual master every day, but by his mercy, I came to know that my only duty was to serve his lotus feet. It is everyone's duty to worship the self realized spiritual master and follow in his footsteps. We should not follow the blind. The spiritual master is our only well wisher, our only relative, and our only protector. Only by his mercy are we fortunate enough to know this. After attaining the lotus feet of my spiritual master, I no longer maintain the mentality that without his service, I have something else to do. When my spiritual master, who is the Lord's dearmost servant, mercifully imparted knowledge of Nanda Nandana's service to me protect from my false ego. Only by serving the spiritual master, the knowledge will be imparted onto me. Understanding? You know. So Nanda Nandana is the only worshipable Lord, the life and soul and ornament of all living entity. The spiritual master is extremely dear to Nanda Nandana. An unqualified person like me cannot serve such a spiritual master with body, mind, and speech. Yet my spiritual master, who is an ocean of mercy and affection, empowers me out of his causeless mercy and treats me with an abundance of love. He is so merciful. If I can attain his mercy, if I can realize that I have no other well wisher in this world, then simply by his causeless mercy, I will be able to attain the qualification to engage in his service. He is pleased by affectionate service. On the day he bestows his causeless mercy on me and becomes pleased with me, I will be properly understand Hari Katha. जिस दिन वो मुझे समझ लेंगे, मुझे accept करेंगे और मुझ पे कृपा दिखाएंगे, उसी दिन मैं हरि कथा को समझ सकता हूँ. It's only by the mercy of spiritual master we can understand something about Krishna. Then nothing other than the service of Guru and Krishna will remain important to me. So जब हम गुरु की कृपा मिलती है, then there is nothing more important to us than serving our Guru and Krishna. So we should always pray to the spiritual master to become qualified to accept his causeless mercy and empowerment. There is nothing with which to compare the spiritual master mercy. I am so unfortunate that I do not consider the spiritual master great. Although the Supreme Personality of Godhead Krishna is controlled by devotion, still I am unable to show gratitude for his causeless mercy on me. That the Lord is controlled by the devotion of our spiritual master. So if we serve such a spiritual master, how much mercy will come upon us? So much. So we have to always hold on to at the lotus feet of our Guru. Then only the knowledge will impart onto us and we can progress in our bhakti. So we have to follow his instruction as our life and soul. Understood, Parth Pratim? अब इतना ये तो बहुत काफी लंबा था, लेकिन मुझे इसका समझने की कोशिश किया मैंने. Good. Try to understand the essence that without the spiritual master, nothing can come to us. Okay? So that is there. Yes, Priya Mataji, you're still sleeping or awakened?
I think she is into the deep sleep right now. Okay, then so we'll be ending up. Let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gantra Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, all the symbol devotees ki jai. Thank you so much. See you all in the after late night Bhagavad Gita class. Hare Krishna. Hare Krishna, everyone.